Oppo ने इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया अपना Find N3 Flip at a starting price of 77,190. Find N3 Flip में एक 6.8 इंच AMOLED मेन डिस्प्ले है with 120 Hz of refresh rate and एक 3.26 इंच का AMOLED कवर डिस्प्ले। ये फोन Dimensity 9200 प्रोसेसर से पावर्ड है। कैमरास के लिए इट कम्स विद 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर, एन 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड ए 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। It got viral because of how it looks, but then 2020 से पहले तो ये भी ridiculous ही लगते थे। The freshly brought to India Dyson Zone is a pretty unique and impressive device. ये एक प्रीमियम वायरलेस हेडफोन है जिसमें इंटीग्रेटेड है एक impressive personal air purifier. The air purifier bit, it will start making sense once the winter smog sets in Delhi. So for now, let's just say it's great that it can be detached. As for the headphone bit, ये वन ऑफ द मोस्ट वेल बिल्ट हेडफोन्स है बिकॉज एवरीथिंग यू टच गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड स्क्रीम्स प्रीमियम। इसका नेटिव साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, क्लैरिटी तो बहुत स्टेलर है, बट बिकॉज द हेडफोन बिट एक्चुअली हैज कंप्रेसर्स बिल्ट इन जो हवा को खींचते हैं एंड देन इट इज हाउस्ड इन मेटल, दिस बल्क हेल्प्स विद पैसिव आइसोलेशन विच इज गुड एंड अपॉन एक्टिवेशन एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इज सो मच बेटर। आप डायसन के कंपेनियन ऐप से इसके काफ़ी सारी फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बट एज अ प्रोडक्ट इट इज़ अ न्यू सेगमेंट इन इटसेल्फ। Qualcomm ने recently host किया a wireless broadband and connectivity day in Delhi. The major talking points being 5G and how it will bring in last mile connectivity for the rest of India. 5G is very further reaching economically, socially, and as we know, 35% or 40% of the country is not yet connected. And so the sooner you get 5G capabilities out there and not rely entirely on fiber, because deploying fiber takes time. You have to dig trenches. You have to make sure you have the right areas available to lay the fiber. 5G is fairly instantaneous. ये इवेंट एक अपॉर्चुनिटी भी था टू सी द एक्सपीरियंशियल बेनिफिट्स जो 5G, 6G एंड 7G लेके आएंगे।